आज हम आपको लेके चलते हैं 79 AD में। प्लेस इटली का एक शहर पॉम्पे। सभी लोग रोज की तरह अपने काम में बिजी थे। नोबडी हैड एन आइडिया कि कुछ ही मिनट में क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। पूरा शहर गैसेस और लावा ने कवर कर लिया। माउंट वेसुवियस नाम का एक वोल्केनो फटा था। कुछ ही समय में पूरा शहर हिस्ट्री बन गया। हेलो एंड वेलकम टू एड्यूकेमी। आई एम इशिता और आज हम पढ़ने वाले हैं वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। व्हाट इज अ वोल्केनो? वोल्केनो बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में एक वेंट है, एक ओपनिंग है जहाँ से मैग्मा चेम्बर से कुछ मटेरियल अर्थ के क्रस्ट पे निकल के आ रहा है। नाउ व्हाट मटेरियल? इट कुड बी लावा, इट कुड बी ऐश, गैसेस, रॉक फ्रेगमेंट्स। इस सबको हम पायरोक्लास्टिक डेब्री भी बोलते हैं। So a volcano is a vent or a fissure on the surface of the earth जहाँ से magma chamber से all this material is coming out, and the whole process of this material coming out from the magma chamber to the surface of the earth is called volcanism. Now before we move ahead, let's step back, let's revise the basics. Earth का interior का basic structure है, 3 लेयर्स होती हैं, कोर, मैंटल एंड द क्रस्ट। मैंटल में अपर मैंटल इट हैज अ सेमी मोल्टन लेयर जिसको बोला गया है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा। नाउ व्हेन वी वर रीडिंग इग्नियस रॉक्स, हमने मैग्मा और लावा के बीच में डिफरेंस समझा था। ऑल द मोल्टन मटेरियल विच इज देयर बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ उसको मैग्मा बोला गया है। But when this molten material comes out to the surface, उसी को लावा बोलते हैं। And on this basis, we had 2 types of igneous rocks. Intrusive igneous rocks जो मैग्मा के solidification से बनेंगे, and extrusive igneous rocks जो लावा के solidification से बनेंगे। Now it is not necessary कि सारा मैग्मा solidify होके rocks ही बना रहा है। It is possible कि कुछ मैग्मा ऐसे ही रह गया, कुछ मैग्मा horizontal form में solidify हो गया। So this is what we are going to study today. These are the different types of intrusive landforms that volcanoes form. Intrusive volcanic landforms. This is a diagram taken from your NCERT. यहाँ पे कुछ intrusive landforms देखेंगे and then we'll study about them one by one. Batholith is here. Then we have Dykes, we have Sills, we have Laccoliths, we also have Phacoliths. Let's read about them one by one. The first one is Batholith. This is Batholith. ये पूरा red structure that you can see. This is Batholith. So Batholith is basically जब मैग्मा बहुत बड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाए उसको Batholith बोला गया है। When magma was coming from the magma chamber towards the surface, वो surface की तरफ जा रहा था, बट वो डीपर लेयर्स ऑफ द क्रस्ट में एक डोम लाइक स्ट्रक्चर की तरह सॉलिडिफाई हो गया, उसको नाम दिया गया है बैथोलिथ। बैथोलिथ इज मेड अप ऑफ व्हाट? बैथोलिथ इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, बिकॉज ये वही मैग्मा है जो सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक्स बनाता है। सो द कंटेंट इज सेम, ये भी ग्रेनाइट से ही बने हुए हैं। Let's move on to the next one. So the next intrusive volcanic landform type is Laccolith. You can see over here in this image, ये Laccolith है। Laccolith is basically solidified magma in a dome-like structure only. But Batholith से ये कैसे different है? Laccolith is in the upper layers of the crust, while Batholith is in the deeper layers of the crust. और Laccolith एक conduit या एक pipe-like structure से ऐसे connected होता है from the deeper layers of the magma, क्योंकि यहीं से magma chamber magma supply कर रहा है to fill the cavity of Laccolith. So this is a Laccolith. ये Batholith है। Batholith deeper layers of the crust में है, Laccolith ऊपर की तरफ है। Laccolith has a feeder pipe, Batholith में feeder pipe नहीं है। Now अगर surface का erosion होता है तो Batholith और Laccolith में से पहले कौन surface पे दिखेगा? Which of these will be exposed first to the surface? So Laccolith, because it is much closer, like I just explained, it is much closer to the surface. It is in the upper layers of the crust, while Batholith is in the deeper layers of the crust
ये भी सरफेस पे आ सकता है बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. लैकोलिथ का एग्जाम्पल वी हैव इन इंडिया. दिस पिक्चर इज टेकन फ्रॉम द कर्नाटका प्लेटो. कर्नाटका प्लेटो का जब इरोजन हुआ, सरफेस इरोजन, तो ये डोम लाइक स्ट्रक्चर्स निकल के आए. इनको बोलते हैं डोमल हिल्स ऑफ कर्नाटका प्लेटो. कर्नाटका प्लेटो की सरफेस वेदरिंग के बाद these domal hills were exposed to the surface, और ये domal hills कुछ नहीं है बल्कि laccolith ही है, and these are also made up of granite. This is also solidified magma. Over the years, erosion, surface weathering हुई and it came to the surface. Next intrusive volcanic landform type is Lopolith. Same magma which was rising, it solidified in the form concave to the sky body like a saucer shape. ऐसे जब magma solidify हो जाए within the crustal layers, उसको बोला गया है Lopolith. This is a Lopolith. You can see this is a saucer shape concave to the sky body. ऐसे करके solidify हो गया. And even a Lopolith has a feeder. ये यहीं से magma rise करता हुआ यहाँ पे इसको कुछ weak rocks मिले होंगे और ये ऐसे solidify हो गया. Let's move on to the next one. Phacoliths. This is a phacolith. I hope you can see it in the image. This is also a phacolith. But इन दोनों में difference क्या है? So basically rocks में ऐसे folds होते हैं. The hill part is called anticline, and this valley part इसको बोलते हैं syncline. जब rising magma या तो anticline पर या syncline पर solidify हो जाए तो उसको phacolith बोला गया है. In both the cases, even if it's the anticline part or the syncline part, कहीं भी वो solidify हो जाए in the folds of the rocks, उसको phacolith बोला गया है. Next landform type is sill. Rise करता हुआ magma, it finds some weaker rocks horizontally, तो वो यहाँ solidify होने लगा और इस horizontal solidification वाली जो landform बनी उसको बोला गया sill. But sill में दो variation है. The thinner ones are called sheets, while the thick horizontal deposits are called sills. अगर बहुत ज़्यादा magma horizontally solidify हो रहा है तो उसको sills बोलेंगे. But अगर space उतना नहीं था but ऐसे थोड़ा बहुत solidify हुआ वहीं पे magma, the thinner ones, they are called sheets. Dykes is the next volcanic landform which is intrusive. The story is same, the basics are same. Rising magma जो crust की तरफ आ रहा है, but अब ये horizontally ही solidify हो गया. It solidifies like a wall-like structure which is almost perpendicular to the ground. Let's go back to the slide and see if we can identify dikes here. This is a dike. You can see ये ground के perpendicular है, just like a wall-like structure ऐसे खड़ा हो गया horizontally. This is called a dike. Dike का भी एक example है in India, that is the Deccan Traps region. I'm drawing the Deccan Traps region for you here. Deccan Traps cover the states of Goa, some parts of Madhya Pradesh, Maharashtra. Sorry, this is Gujarat. This is the Deccan Traps region. Dikes को बोला जाता है कि they are the feeders for the eruptions that led to development of the Deccan Traps. जब Deccan Traps का weathering हुआ तो उससे हमें मिला black soil. And black soil is famous for cotton production. From Deccan Traps, we are able to relate it with black soil. Black soil से we are able to relate it with cotton production, and this is how you have to study geography. Geomorphology, agriculture, soils, सब कुछ relate करके पढ़ना है. Let's discuss some previous year questions. This one was asked in 2024. Consider the following: pyroclastic debris, ash and dust, nitrogen compounds, sulfur compounds. How many of the above are the products of volcanic eruptions? Pyroclastic debris, first slide में देखा था, all the rock fragments that were coming out. Ash and dust, nitrogen, sulfur compounds, हमने पढ़ा था gases भी निकल रही हैं volcanic eruption में. So D is the answer, all four.
The next question is about barren islands. ये आज क्लास में नहीं पढ़ा है, but इसको यहीं पे डिस्कस करेंगे. Barren Island volcano is an active volcano located in the Indian territory. The first statement is correct. This is the location of Barren Island. I hope you can see it on the screen. Barren Island lies about 140 km east of Great Nicobar. This is Great Nicobar. Indra Point है इधर उसके ऊपर. And this is Port Blair. Port Blair के नॉर्थ ईस्ट में है Barren Island. Great Nicobar तो काफी दूर है उससे. And east में भी नहीं है. That's the catch. This statement is incorrect. Third statement is the last time the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then. This is incorrect because the last time Barren Island volcano erupted was in 2018. उसके बाद there were eruptions till 2021-22. So that makes it wrong. So the correct answer is A, one only. Okay. So for today we stop here. In the next class we will discuss the types of volcanoes. Types of volcanoes में हम पढ़ेंगे the extrusive landforms volcanoes are forming. And in the next class when you come, do revise the intrusive landforms that we discussed today. If you found this video helpful, share it with your friends and give it a thumbs up. Thank you.